Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोस गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोस रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें पढिबा अबाउट द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस आ तारो किछटा एग्जांपल्स मध्ये देखिबा तेबे ताहा पूर्वरु हमको जानिबा को हेबो जे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस ऑलरेडी प्लस 2 रे भी तमे पढिछो सो थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहले हमें कोन बुझिबा अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज सेड टू बी टेकिंग प्लेस इफ thermodynamic variables of a system undergoes a change with respect to time. So accordingly, there are different types of thermodynamic processes. Number one, isothermal process. It is a process where the temperature of the system remains constant. Okay, so T is equal to constant or the change in temperature is 0 in case of isothermal process. Second, isobaric process. एथिरे कोन हबो तमरो प्रेशर टा सिस्टम रो एठी कांस्टेंट रहिबो ओके इन दिस केस the pressure remains constant so the change in pressure delta P is equal to 0. Third one is isochoric process. एथिरे वॉल्यूम कांस्टेंट रहिबो so that एबे change in volume delta V हे गला 0. and the fourth one ये हला adiabatic process. एथिरे तमरो जो हीट अछि सेटा कांस्टेंट रहिबो. It is a thermodynamic process in which no heat is allowed to enter or leave the system. Okay, so this is a adiabatic process. Fifth one है cyclic process. Cyclic process भी तुम जानी चो. It is a thermodynamic process in which the system returns to the initial state after undergoing a series of changes. It is called a cyclic process as shown in this figure. So देखो initial state है state A रू ये गला state B को पुणी B रू वापस आसिला state A को. So एई भलिया जदि different changes series of changes को ये पारी हला परे पुणी initial state को जदि वापस आछि ताले हमें सेई प्रोसेस को cyclic process बोली की कहिबा. Okay, this is a PV diagram. Okay, एबे हमर मूल टॉपिक जोटा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. सो प्रथमे हमें रिवर्सिबल प्रोसेस ता देखिबा. एठी पई हमें कंसीडर करिबा गोटे गैस which is enclosed in a cylinder which is fitted with a frictionless piston. Okay, and it is perfectly insulated from its surrounding. Insulated हे कि अछि ता माने कोन एबे हीट आउ बाहर को जाई परिबो नाही किंबा बाहरु हीट मध्ये आउ एंटर करि परिबो नाही. अच्छा, some removable weights are there which are placed on the top of the piston. Piston ऊपर removable weights किछिटा रखा जाइछि. Suppose P1, V1 और T1 ये हेगला pressure, volume and temperature of the gas in the cylinder in the initial state. Okay, अच्छा एबे नेक्स्ट आमे कोन करिबा ए जो weight रखा हिछि ताको आमे धीरे धीरे रिमूव करिबा. Okay, the weights are now removed by very small amount at a time so that the piston now will move outward. हला weight जदि आमे धीरे धीरे काढी नेबा ताले piston टा एबे बाहर को मूव करिबो slowly. Okay, मन रखो isothermal होची प्रोसेस टा बहुत slow occurring process. Okay, so the gas now expands adiabatically and the pressure and volume of the gas adjust themselves so that the system is always in thermodynamic equilibrium. माने एठी जो adiabatic expansion होची गैस रो आमे ताकू quasistatic बोली की कहि परिबा. ए quasistatic कोन सेड भी आकू पढिबा हमें. अच्छा, so the process of removing the weights in very small steps is continued
अप टू अ लिमिट जिते प्रेशर वॉल्यूम आउ टेम्परेचर हो गला फाइनाली P2 V2 आउ T2 ओके ये हो गला प्रेशर वॉल्यूम आउ टेम्परेचर गैस रो इन द फाइनल स्टेट ओके एबे कौन करबा हमें वेट जो अच्छी से वेट को आमे एबे रिप्लेस करबा अगेन in a very small amount at a time so that now the piston moves inward ओके पुणी वेट को आमे से पिस्टन उपरे थोइबा ता माने सो दैट पिस्टन टा भीतर आड़ को एबे मूव करिवो किंतु सेही भलिया वेरी स्लोली इन अदर वर्ड्स एबे कोन हबो एटा एडियाबेटिक कंप्रेशन हबो गैस रो which is also quasi-static okay so the process of replacing the weights in very small steps it is continued till the gas reaches its initial state पुणी से भलिया प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर जोटा कि इनिशियली थिला से भलिया आसीगला P1 V1 आउ T1 so ए जो प्रोसेस टा हला एटा हला adiabatic compression and the gas would now pass through exactly the same intermediate steps जो steps रे एक्सपांशन होइतिला गैस रो सेही स्टेप्स रे पुणी कंप्रेशन होइकी वापस तार इनिशियल स्टेट को ये पळे आसिला थ्रू व्हिच इट हैज पास्ड ड्यूरिंग द एडियाबेटिक एक्सपांशन ता माने हमें कहि परिबा जे ऑल द इंटरमीडिएट स्टेट्स आर रिट्रेस्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ओके एक्सपांशन जो डायरेक्शन होइतिला ठीक तार उल्टा डायरेक्शन रे एबे कंप्रेशन हैला ओके सो सच ए प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस ओके जोटा रिवर्स करिकी डायरेक्शन रे पुणी वापस इनिशियल स्टेट को फेरी आसुची तेणु आमे डिफाइन करि परिबा गोटे रिवर्सिबल प्रोसेस को a reversible process is that which can be retraced in the opposite direction so that the working substance passes through exactly same condition as it does in the direct process okay in other words ame kahi pariba je it means that in a step where the heat is absorbed in the direct process re heat ta absorb hela it is again given out in the reverse process re heat ta puni bahar को आसीबो और emit हबो and vice versa जदि direct process रे emit हेची heat रो ताले reverse process रे absorb हबो similarly in a step where work is done by the working substance हला एठी preposition देखो by लागिची ओके डायरेक्ट प्रोसेस रे अच्छा in the same time equal amount of work is done on the process एबे preposition लागिला on the working substance केतेबेले ना रिवर्स प्रोसेस रे डायरेक्ट प्रोसेस रे by the working substance जेतिकी कार्य हला रिवर्स प्रोसेस रे on the working substance सेतिकी ही कार्य हेबो in case of reversible process so there are certain conditions for the reversible process number 1 hela for the process to be reversible it should be carried out very slowly सब बड़े मन रखियो रिवर्सिबल प्रोसेसटा बहुत स्लोली हुए okay so that the system remains in thermodynamic equilibrium at each stage of the process and the process is again quasi static okay second point रे कहूँ there should be no frictional forces present आमे जानिछु frictional force सब बेले हमरो unnecessary energy टा को खर्च कर दिए work done जो क्षेत्र रे हुए फ्रिक्शन पाई सेटा वेस्टेज ऑफ एनर्जी हुए तेणु ए रिवर्सिबल प्रोसेस रे देयर शुड बी नो फ्रिक्शनल फोर्सेस शुड बी प्रेजेंट ऑल्दो इट इज थियोरिटिकल ओके एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू रियलाइज दीज कंडीशन इन एक्चुअल प्रैक्टिस ए जिनसटा एठी कहूची एटा थियोरिटिकली ओनली दस नो प्रोसेस इज एग्जैक्टली रिवर्सिबल इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड ओके सत सतिका ठीक एक्जैक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस बोली किछि नाही एटा थियोरिटिकली हाउएवर किछिटा एग्जांपल आमे कहि परिबा रिवर्सिबल प्रोसेस रो in the practice which are given below let us see some of the examples of reversible process number 1 re all the isothermal and adiabatic changes माने expansion भी ही पारे compression भी ही पारे all these are said to be reversible केते बेले when they are performed slowly जदि स्लोली ही परफॉर्म होची ए आइसोथर्मल हो कि एडियाबेटिक चेंजेस ताले आमे ताकू रिवर्सिबल प्रोसेस कहि परिबा इन सच ए केस
it is assumed that there is no friction to be overcome, as work done in overcoming the friction is wasted ଯେମିତି କହିଲି. Okay, so this process is carried out very slowly. It is a very slow process, hence no energy is wasted in producing the oscillation and eddy currents. এই oscillation eddy current এটা भी तमरो energy रो wastage हेई थाए. So जेहेतु এই process टा बहुत slowly होउची तेणु এই oscillation ଆଉ eddy current रो हेबार भी chance बहुत कम, in fact negligible. And no heat is also lost by conduction, convection and radiation. Okay, under these conditions, if heat is supplied to a given mass of a gas at constant temperature, ताले heat जदि आमे कला गोटे gas को ये कौन हबो expand करिबो. It expands and it will do some external work. Okay, if the same amount of work is done on the gas in compressing it, তাহলে এবে কোন হবো the same quantity of heat will be given out. Okay, যদি আমি work done টা on the gas করলা মানে compress করলা তাহলে সমান quantity of heat এই গ্যাস রু পুনি নির্গত হবো. Okay, second example, suppose ice melt करूची যেতেবেলে আমি কিছু certain amount of heat দউଛୁ তাକୁ, so that ସେଇ heat को absorb करिकी ice टा melt ହେଇକି water रे convert होउची. Similarly water जदि अछि सेटा भी ice रे convert हेबो केतेबेले सेई समान amount of heat जदि आमे सेई water रु काढी नेबा. Okay, so that it will be converted to ice. So this is a very good example of reversible process. Third point, if the resistance of a thermocouple गोटे thermocouple नहीं गला तार resistance को जदि आमे देखिला आउ ताकू suppose आमे negligible नेला. Okay, it is neglected, then there will be no heat produced due to Joule heating effect. Okay, ताले एबे कोन होबो, in such a case Peltier heating or cooling will be reversible. Okay, and at a junction where a cooling effect results due to Peltier effect, when current flows in one direction, then an equal heating effect is also produced when the current flow in the reverse direction. Okay, ତେଣୁ ଏଟା ବି ଗୋଟେ reversible process ର example. And the fourth process ହେଇଗଲା ତମର electrolysis. So ଏଇ ଭଳିଆ example ଆମେ ଦେଇ परिबा in case of reversible process. Now ଏବେ second process को देखिबा irreversible process. तो ऊपर जो आमे एग्जांपल टा नउथला जेतेबेले आमे पिस्टन ऊपर वेट थोइकी ताकू धीरे धीरे रिमूव करथुला such that the system was passing through different states. Initial state थिला तमरो P1 V1 T1 पुणी से फाइनल स्टेट को जाउथला P2 V2 T2 पुणी कम बैक करथला P1 V1 T1 इनिशियल स्टेट को पुणी फेरी आउथला. सो सेम एक्सपेरिमेंट को जोटा आमे ऊपर देखिला ताकू जदि आमे परफॉर्म करिबा आउ किंतु गोटे जिनस आमे एबे अलगा करिबा जो वेट्स को आमे काढुतला पिस्टन रो हैला ताकू एबे सेथिरे कोन करथला बहुत स्लोली काढुतला एबे एई वेट्स को आमे बहुत क्विकली काढिबा. देन एबे कोन हबो द गैस विल अंडरगो सडन एक्सपांशन एबे आ धीरे धीरे एक्सपांड करिवो नाही, सो दैट the intermediate states will not be in equilibrium state. Okay, that is it will be not possible to define the value of pressure, volume and temperature for these intermediate states. Similarly ebe jodi ame sei bhaliya weights को replace kariba quickly such that the gas will undergo sudden compression पुणी जो वापस आसिला बेलको. ओके, ताहले एबे भी सेही भलिया जो वैल्यू रहिला प्रेशर वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर फॉर दीज इंटरमीडिएट स्टेट्स विल अगेन नॉट बी डिफाइंड. सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दीज सडन कंप्रेशन it will not be possible to reproduce the intermediate states through which the system has passed during the sudden expansion. So एई भलिया प्रोसेस को हमें irreversible process कहि परिबा. ओके, सडन एक्सपांशन हैला पुणी सडन कंप्रेशन हैला सो दैट एबे आउ इंटरमीडिएट स्टेट्स रो प्रोडक्शन हेई परिबो नाही. इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस द इंटरमीडिएट स्टेट्स. ओके, ताहले हमें irreversible process को डिफाइन करि परिबा. हेंस an irreversible process is that which cannot be retraced in the opposite direction, so that the working substance does not pass through
the same intermediate states through which it has passed during the direct process. ठीक reversible process रो ठीक उल्टा. ओके एबे एठी आउ रिट्रेस जेमती होतला रिवर्सिबल प्रोसेस रे ए जिनसटा इरिवर्सिबल प्रोसेस रे इट कैन नॉट बी पॉसिबल. ओके आकु बढ़िबा. Let us now see some of the examples of irreversible processes. Number 1 है the work done against friction which is irreversible. है friction पाई जो work done है सेटा absolutely wastage of energy सेटा वापस फेरिकी आसी परिबो नहीं. So it is irreversible. It is because in reversing the direction of motion again work has to be done against friction. है जेमती कि आमे गोटे साइकिल रे जाउछु रास्ता रे है रास्ता रे जदि आमर फ्रिक्शन जिते बेसी अच्छी से हिसाब से आमको बेसी कार्य संपादित करने को पड़ो. पुणी जदि से फ्रिक्शन को आम ओभरकम करने को चाहिए रिवर्स करने को चाहिए डायरेक्शन को ताहले मध्य पुणी आमको काम करने को पड़ो ओपोजिट डायरेक्शन रे. तेणुक यही जो फ्रिक्शन पाई जो वर्क डनटा है अगेंस्ट द फ्रिक्शन ताकू आ वापस आम पाइपर ना. सो दैट दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल. नंबर 2 जूल केल्विन इफेक्ट जदि आमे देखिबा एटा भी गुटे होची इरिवर्सिबल प्रोसेस. ऑन रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ गैस a similar cooling or heating effect is not actually observed. Similarly तमरो जदि diffusion अछि conduction अछि radiation अछि all these are irreversible process. 3 नंबर रे the heat produced by passage of current through a resistance is irreversible. Okay, it is because even when current is reversed जदि आमे उल्टा डायरेक्शन रे करंट को प्रवाहित भी करिबा ताले मध्य सेम इफेक्ट आसीबो पुणी से हीट ही प्रोड्यूस हेबो. ओके कूलिंग किछि हेबो नाही. 4 नंबर प्रोसेस हला तमरो एग्जांपल रो एठी रस्टिंग ऑफ आयरन लुहा रे जो कलंकी लागि जाय सेटा वंस कलंकी लागिला परे पुणी आ वापस से फेरी परिबो नाही. सो इट इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस. आ गोटे एग्जांपल भी कहि रखुची जेमति कि तमरो एटम बम है सेटा भी बहुत क्विकली से जिनसटा हुए. एटम बम रो जो प्रोसेसटा द न्यूक्लियर रिएक्शन इट इज ऑल्सो द न्यूक्लियर फिशन जोटा इट इज ऑल्सो अ इरिवर्सिबल प्रोसेस. ओके लेट अस नाउ सी जो हमें डिस्कस करथला ड्यूरिंग द केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टेट प्रोसेस माने कोन टिके हमें देखिबा. देखो क्वासी स्टेट और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहले हमें बुझिबा इट इज ए प्रोसेस which is carried out very slowly so that the system which is under consideration will remain at all times arbitrarily close to the equilibrium state. Okay so reversible process हमें जेमती देखुतला से बड़ा क्वासी स्टेट प्रोसेस रे मध्य जो सिस्टम टा अछि एटा बहुत स्लोली ए क्वासी स्टेट प्रोसेस टा carried out हबो in which system will undergo in a close equilibrium state. Okay arbitrarily बहुत close पाखापाखी थिबो equilibrium state सहित. Okay so the state of a system is uniquely determined by a point on a PV diagram. हैला गोटे PV diagram जो pressure और volume against रे जो आमे डायग्राम टा करू ताकू PV diagram बा इंडिकेटर डायग्राम मध्य को जाय जो थरे कि गोटे सिस्टम रो स्टेट को आमे यूनिकली गोटे पॉइंट द्वारा रिप्रेजेंट करि परिबा. सो ईच पॉइंट on this PV diagram will represent an equilibrium state. अच्छा एबे गोटे लाइन द्वारा आमे ए जो सीरीज ऑफ सच पॉइंट्स बाहरला ताकू जॉइन करिबा देन it will represent a succession of infinitely large number of equilibrium states. Okay which are infinitesimally close to each other and hence depicts a quasi static process. ओके या को हमें स्टैटिस्टिकली भी एक्सप्लेन करि परिबा. सपोज हमें गोटे गैस कंसीडर कला. सपोज ए गैस टाकू हमें एनक्लोज करिकि रखिछु इन ए सिलिंडर व्हिच इज फिटेड विथ ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन. अच्छा ए गैस को एबे एक्सपांड करिबा हमें आइसोथर्मली बट बाय ए वेरी इनफाइनेटेसिमल अमाउंट सच दैट इनिशियल स्टेट जदि यार थिला PVT तेबे फाइनल स्टेट सपोज हे गला P - dP V + dV आउ टेम्परेचर टा एज इट इज रहउची. ओके एठी dP आउ dV हला अति इनफाइनेटेसिमल अमाउंट ऑफ चेंज इन द प्रेशर एंड वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली. देन एबे जदि गैस रो हमें मॉलिक्यूल्स को देखिबा द मॉलिक्यूल्स विल आल्सो
be shifted from the most probable distribution initially जोटा थिला pvt आउ new most probable distribution final state रे p minus dp v plus dv आउ t ताले ए जो readjustment होउची this readjustment takes a certain amount of time suppose से time को हमें नेला गोटे infinitesimal time d tau okay अच्छा जदि ए time जो d tau it is if much less than the time dt that the gas takes to change its state by an infinitesimal amount ताहले आमे से प्रोसेस को कहि परिबा क्वासी स्टैटिक ओके ए डी टाउटा जदि dt रु बहुत छोट है ताहले प्रोसेसटा हो जिवो क्वासी स्टैटिक है ये है स्टैटिस्टिकल यार डेफिनेशन बा एग्जांपल सो फॉर ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस dt is very greater than d tau or d tau is very less than dt. So when a system changes its state quasi-statically, then the process is very slow and the system is virtually in its most probable state for all the time. Okay, so ये जो quasi state और quasi static process रो importance कौन अच्छी thermodynamic process रे देखो एठी जो हमें explanation करला ये जो quasi static process रो the state of a system is uniquely determined by a point in a PV diagram or indicator diagram এটা हमें देखिला अच्छा एठी प्रत्येक पॉइंट को हमें ये जो indicator diagram रे देखुतिला जे it is representing the equilibrium state. So when a system changes its state quasi-statically, the process is very slow. Okay, quasi-static process टा होची बहुत slow occurring process and the system is in its most probable or equilibrium state for all the time. So this is why same जिनस एठी जहाँ ऊपर लिखी थिला same जिनस एठी लिखा है so this is why the thermodynamic process should be quasi-static for कहीं कि quasi-static हमार कथा because PV diagram जो अच्छी ताकू एटा meaningful diagram टा आसीबा पाई ही thermodynamic process टा quasi-static हेबा दरकार okay thank you